अगर शिप का परमानेंट मैग्नेटिज्म हैज गॉट समथिंग लाइक दिस, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा अभी हम देखेंगे. बट हैव वी अंडरस्टूड द concept of 9 imaginary rods which are supposed to be present around the compass and produce effect on the compass, deviations create करते हैं. Is it understood, the 9 rods? Yes sir. एक बार में नहीं समझ में आएगा, पक्की बात है. So don't worry, don't be worried कि क्या हो गया ये, ऐसा एक बार से नहीं होता, एक बार में समझ में नहीं आता, मुझको भी नहीं आया. Then I had to, revisit it again and again to understand, then finally get the picture of it. So do study. Now that we have seen that there is a permanent magnetism of the ship, which remains for the life of the ship, there can be minor changes over the period of 10 years, 20 years, and so, but overall it remains permanent. We have already understood that there is something called induced magnetism. For that we need to have a soft iron, और इसके अराउंड अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया तो दिस आल्सो बिकम्स अ मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया तो इट बिकम्स नॉर्मल iron, piece of iron. So now we know that there is soft iron and it can be magnetized and demagnetized easily. Magnetism is, or the magnetization is maximum when the rod is kept in line with the lines of forces, magnetic field, and it is nil or minimum when it is at 90 degree. अगर lines of forces ऐसे हैं और magnet को बार को हमने ऐसे रखा, piece of iron को, तो minimum magnetism. So just for the idea, जहाज में एक क्रेन है जो कि पार्क किया हुआ है फॉरवर्ड आफ्ट में. क्रेन का बूम is parked, that means it is horizontal. Yes or no? ऐसे ऐसे चलती है, उसको जब पार्क कर दिया तो बूम को ला करके हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया. Yes sir. जब हॉरिजॉन्टल कर दिया इट इज आल्सो फॉरवर्ड एंड आफ्ट, क्योंकि नॉर्मली बहुत जगह हम उसको थोड़ा सा एंगल पे भी रखते हैं, बट लेट अस से इट इज फॉरवर्ड एंड आफ्ट. So now this is a horizontal forward and aft soft iron. Is that okay? Yes sir. Now if the ship is going north or south, will this develop a magnetism? Lines of forces like this from north to south or south to north, and the soft iron, the boom, also in the same line, will it have maximum magnetization? You're not following. नहीं है sir. Did we not see that lines of forces are running from north to south to north on the earth? Okay, मैं अच्छा चलो स्क्रीन पे बताता हूँ फिर से एक बार. स्क्रीन पे नहीं, good visible? Yes sir. Yes sir. Here is the north of the earth. This is south. The blue pole is here. Sorry, red pole is here. Blue pole is here. So let us put the red pole. अच्छा ठीक है, चलो red pole छोड़ दो.
So the lines of forces are going like this, horizontal here, vertical at this place. Is it okay? Yes, sir. Yahan pe it is dipping, so it has got an angle of dip. That is okay. Angle Yes, of sir. dip is 0 degree here, 90 degree here, 90 degree at this place, 0 degree here. In between, there will be some angle here. So angle of dip. Is it okay? Yes, sir. Now, the compass needle is pointing in this direction because lines of forces, these lines of forces here are aligned like this. So magnetic compass is aligning with these lines of forces. Is that correct? Yes, sir. What we are saying, if there is a piece of iron which is kept in line with the magnetic lines of force, then there is maximum magnetization. If a piece is kept at 90 degree to this, there is minimum magnetization. The soft iron, if it is in line with the magnetic lines of forces, then maximum magnetization. If it is perpendicular to the lines of force, then minimum magnetization. This is observation, this is study, this is what happens. Now, if we have the same lines of forces which are running like this, coming from south, but getting into north. If the ship is here, जिसमें the ship's boom was, the crane was like this, will it have magnetization maximum or not? This is soft iron, for example. Will it have maximum magnetization because of Earth's magnetism or not? Yes, sir. The same will happen if the ship is going in this direction, because the boom will still be like this. Yes, sir. 1 second. But in this case, this end will be red, and in this case, this end will be red. So stern में red हो गया. ये वाली केस अगर देखें तो stern में red है या नहीं? अलग अलग ड्राइंग बनाते हैं. This end is blue, this end is red. So the lines of forces are like this. So when the magnet is created, this end becomes red and this end becomes blue. The south end becomes blue, the north end becomes red. So since this is towards north and this is south, so this end will become red or not? Yes, sir. The same boom when going south, this end will become red or not? Yes, sir. Think of the compass. If the compass was here, there is a blue end near the compass. Now, when it is going south, in this case, there is a red end near the compass. Red end towards the क्या दिखाना था? Okay. In this case, the blue end is forward of the compass. In this case, the red end is forward, aft of the compass. Is that okay or not? So इसका Yes, blue sir. end यहाँ, इसका blue end यहाँ.
तो दोनों के सिचुएशन थोड़ी बदली हुई है कि नहीं? Yes, sir. ये मैग्नेट जो इस कंपास के फॉरवर्ड में था, यहाँ कंपास के आफ्ट में आ गया या नहीं? आ गया सर. तो इसको हम लोग वो जो ABCD पढ़े थे हम लोग अभी, उसमें इसका रोल और इसका रोल आ गया या नहीं? जो रॉड्स बोल रहे थे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट, समथिंग आफ्ट ऑफ द कंपास, समथिंग फॉरवर्ड ऑफ द कंपास, समथिंग स्टारबोर्ड पोर्ट, all that is happening or not? हाँ सर. Right ना? Now suppose the shape is going east or west. वही बूम यहाँ पे कंपास, वही बूम यहाँ पे कंपास. Will it have magnetization or not? These two, the booms. The course is easterly here, course is westerly here. This crane boom is going to have magnetization or not? Yes, sir. पिटाई खाओगे. What we said, when the soft iron is perpendicular to the lines of forces, what सर तो happens? मिनिमम रहता है, कुछ तो रहेगा. कुछ तो रहेगा. तो उसका इफेक्ट हम लोग नील मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे नील है मान. That means this will have no impact on the compass because it is not getting magnetized. लेकिन जो बीम चल रहे थे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे यहाँ पे, जबकि इस कोर्स पे जाते हुए ये मैग्नेटाइज हो रहा था, बट दीज बीम्स जो स्ट्रक्चर में है, दे वर नॉट गेटिंग मैग्नेटाइज्ड. तो कोई मैग्नेटाइज होता है, कोई नहीं होता है, अलग अलग हेडिंग पे अलग अलग सिचुएशन बनती है. एंड ओवरऑल इफेक्ट इज represented by nine imaginary rods. Are we good? बात समझ में आई कुछ? Yes, sir. So what happens if there is this compass जिसका red end is pointing to north, and we have a soft iron or permanent magnetism, let us say, in which the blue end is forward of the compass. What will be the situation? What will be the deviations caused by this permanent magnetism? Permanent magnet of the shape is like this. That means this will remain with the shape as it is. No matter what heading she is going, this will remain forward of like this only because it is permanent magnetism. तो इंडक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, it is permanent, बन गई. So the shape may be going in this direction, may be going in this direction, may be going southeast, may be going south, may be going southwest, may be going west or northwest. In all these situations, the ship permanent magnet will remain like this or not? Because it is permanent, तो वो चेंज नहीं होता है. ये हमेशा ऐसे ही रहेगा या नहीं जहाज के साथ? Here, the blue pole is always this side.
The compass here is like this, always pointing to north, like this, like this, like this, this, and this. The red end of the compass is like here all the time. So, do you think there will be some kind of deviation faced by the compass here? क्या होना चाहिए? और ये ब्लू एंड है, ये रेड एंड है, तो इसको और इधर को खींचेगा या नहीं? Yes, अनलाइक sir. पोल सब्ट्रैक्ट, तो ये अनलाइक पोल है, तो इसको इधर और इधर की तरफ भी खींच के रखेगा या नहीं? हाँ मतलब सर, डेविएशन नहीं होगी। नहीं सर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना था, प्लस ये वाली जो मैग्नेटिज्म है इसमें ऐड कर देगा, तो ज्यादा फोर्स से इसको इधर को खींचेगा। हाँ सर। यहाँ पे रेड यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है, तो इसको इधर को अट्रैक्ट करने को देखेगा या नहीं? Yes, sir. दैट मीन्स यहाँ पे कंपास जो है ईस्टर्ली डेविएट होगा। Yes, sir. यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिज्म वाज लाइक दिस, इसको इधर में खींच रहा है थोड़ा सा, ये जो परमानेंट मैग्नेट है वो उसको इधर खींच रहा है। दोनों का रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस और नॉट। दैट इज व्हाई विथ दिस रिजल्टेंट द कंपास गोज लाइक दिस। इसी के बराबर ऐसा इधर को इस रिजल्टेंट पे चला जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज जो है यहाँ पे है और अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है वो यहाँ पे है। तो दोनों इफेक्ट के चलते दिस इज गेटिंग ईस्टर्ली डेविएटेड। यहाँ पे Yes, sir. दिस हैज सिंस गॉन टू द एक्सट्रीम राइट, तो ये वाली फोर्स बढ़ गई, ज्यादा खींच रहा है Yes, sir. इसको। Easterly component बढ़ गया। दैट मीन्स डेविएशन विल बी मोर, सो मैक्सिमम ईस्टर्ली हो जाएगा। होएगा या नहीं? Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा? द ब्लू एंड हेयर, the blue end towards this. So is it going to push it towards this repelling or not? Yes, sir. That means here also easterly deviation. इधर तो वेस्टर्ली हो जाएगा ना सर, फिर अगर रिपेल करेगा उसको तो। अगर इसको पुश किया हमने इस एंड को, तो ये इधर को जाएगी या हाँ नहीं? सर, तो ये ईस्टर्ली हो जाएगा, ईस्टर्ली हो जाएगा। यहाँ पे सस्पेंडेड है ना, यहाँ पिवट पे सस्पेंडेड रहता है, तो इसको Yes, एक sir, एंड yes, को sir. पुश करें तो ये इधर को जाएगा या नहीं? हाँ सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिज्म ऐसे, लेकिन ये वाली जो पोल है ये इसको ऑपोजिट खींच रहा है थोड़ा सा, तो एक फोर्स इतना, दूसरा फोर्स इतना, मतलब नेट जो डायरेक्टिव फोर्स है वो कम हो गई। जो यहाँ प्लस हुआ था इतना प्लस इतना हो गया, मैक्सिमम हो गया था, यहाँ पे कम हो जाएगी, बट डेविएशन 0 होएगा। Yes, sir. सो नो डेविएशन, बट डायरेक्टिव फोर्स कम हो गया। जो पहला केस हमने लिया था यहाँ पे, उसमें अर्थ का मैग्नेटिज्म इतना प्लस ये और अट्रैक्ट कर रहा था, तो इतना बढ़ गया। यहाँ पे केस उल्टा हो रहा है, अर्थ का मैग्नेटिज्म इतना, ये दोनों एक दूसरे को वापस पुश कर रहे हैं, सो मैक्सिमम जो था वो मिनिमम पे आ गया। डायरेक्टिव फोर्स जिसके चलते needle is pointing towards that side has become minimum.
What will happen here? Blue and here. सर वेस्टर्ली हो जाएगा वो डेविएशन Very good. Westerly हो जाएगा. इस केस में सर मैक्सिमम वेस्टर्ली very good. Maximum westerly. In this case, सर वेस्टर्ली because it will attract here, so again westerly. So what you are saying, on all easterly courses, the deviation is, ईस्टर्ली सर and all westerly courses, the deviation is westerly. वेस्टर्ली North and south, there is no डेविएशन deviation. Only directive force becomes maximum here. Directive force becomes minimum on southern course, but there is no deviation because of this situation where what we are saying that the blue pole is forward of the compass. अगर ये केस है तो what if we have a red pole here? मतलब परमानेंट मैग्नेट ऐसे बनी है जो इस सिचुएशन में है, फॉरवर्ड ऑफ द कंपास देयर इज अ रेड पोल. देन व्हाट विल हैपन? सर नॉर्थ और साउथ कोर्स में नो डेविएशन, जितने भी ईस्टर्ली कोर्स रहेंगे उसमें वेस्टर्ली डेविएशन और जितने भी वेस्टर्ली कोर्स रहेंगे उसमें ईस्टर्ली डेविएशन. गुड. दैट मींस इफ वी हैव दिस सिचुएशन, यहाँ पे दोनों रिपेल करेंगे तो इधर को पुश करेगा, दिस बिकम्स वेस्टर्ली. यहाँ पे रेड पोल है, सो दैट अगेन विल बी वेस्टर्ली. There also westerly, but this time this side it is easterly. So if there is a red pole forward of the compass, on all easterly courses the deviation is westerly, and all westerly courses the deviation is easterly. Getting the idea? क्या होता है magnetism का effect? यस सर. So depending on the strength of the magnetism and also the location of the ship where she is sailing, there can be different kind of deviations noted on different courses. So if you are in northern hemisphere doing certain kind of course, तो कोर्स स्टीयर करने के पहले आपको पता करना होता है कि इस कोर्स पे डेविएशन कितना होगा, इस लैटिट्यूड पे, इस लोकेशन पे वेरिएशन कितना होगा, उसको प्लस माइनस करके देन फाइनली यू आर सेटिंग द कोर्स ऑन द कंपास. This is algebraic sum. The net error is going to be algebraic sum of the variation and deviation. मतलब at a given location, variation is, let us say, 7 degrees easterly. The ship's magnetism you have calculated is 3 degrees of deviation, which is westerly. So the compass will be 7 degrees this side because of this, and 3 degrees again back because of this. So where is what is the error? 4 degrees easterly. 4 degrees easterly is the net error. The compass will show less by 4 degrees.
So if let us say you are going to go 050 and you have calculated that net error is 4 degrees easterly, then to do the right course of 050, you must steer 054 by compass. No, sorry, 46. You must do 046. Then the ship will be actually going 050. Error east, gyro लीस्ट least. तो अगर ईस्टर्ली एरर है तो gyro should show less than the actual. ट्रू ये करेगा तो gyro कंपास ये दिखाएगा. दैट मीन्स gyro कंपास से आपको 046 स्टीयर करना है तो आप 05 चलेंगे. Understood? यस सर All right. So now we'll go to the slides and talk some more about this. Let me sit down. Let me share the slide first. क्या हो रहा है? Is the screen visible? यस सर Okay. Deviations on various headings by permanent magnetism. अभी जो हमने देखा वही चीज है. Just read. देखिए अब समझ में आ रहा है कि नहीं जो आप पढ़ रहे हैं. The needle points towards north because of Earth's magnetic field. But उसके आसपास में दूसरा मैग्नेट आया तो दूसरे मैग्नेट का भी इफेक्ट आने लगेगा कंपास पर. इट विल अफेक्ट द डायरेक्शन in which the compass is pointing. That is what we have just studied. That ship has lot of magnetism, basically categorized as permanent magnetism or induced magnetism. जहां पे इन दोनों मैग्नेटिज्म का रिजल्टेंट काम करेगा उस डायरेक्शन में कंपास विल स्टार्ट पॉइंटिंग, जो हम पैरेललोग्राम मेथड से अभी हमने बोर्ड पे भी देखा. नेक्स्ट, व्हाट इज एच? पहले पैराग्राफ में व्हाट इज एच? दिव्या,
दिव्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अरे वाह, क्या बात है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, रिमेंबर कि हमने कहा था कि अर्थ पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल, और इस पे कुछ एंगल बनता है, एंगल ऑफ डेप्थ। तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिराइव कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट डिनोटेड बाय Z, Z सर। अरे Z. वाह, क्या बात, वेरी गुड। H is S cos theta और cos dip angle, Z is sin theta, H sin theta. Good. T cos theta, T sin theta रहता है ना सर? है? हाँ, T is the total. अच्छा, मैंने क्या बोल दिया? H cos theta बोल दिया। H cos theta बोल दिया था सर। अच्छा, सॉरी, नहीं, T टोटल जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, दिस इज T, then this is H and this is Z. So by parallelogram method we can find out this is the angle of dip theta, so we can find out this is T, बीच वाला जो है earth's magnetism field is T. So read on quickly. सर आपका वो डायग्राम वाला स्क्रीन शो हो रहा है। Oh, अच्छा, रुको, अभी हाँ सर, अभी आ गया। okay. We have already done it on screen on board, so just read and verify your understanding. हाँ सर, पढ़ लिया। Next. So on screen what you have is this. On top you can see N written, which is the north pole, south pole, or direction, basically pole nahi hai, south and north direction. The horizontal component H is represented by a line on the left of the screen and also the right of the screen. The ship is having permanent magnetism in such a way that there is a blue pole forward of the compass. The ship right now is on north heading. Since we have already done it, I am going to show all the details of the diagram. Re-verify your understanding. Here DF on top and bottom of the screen is the directive force, the resultant force. The delta which you are seeing, the small Greek letter, is basically the deviation. It is the symbol of deviation, delta. Any questions here, gentlemen? Is it all clear? Take a look.
take a screenshot also. यस सर ले लिया. कोई डाउट इसमें? नहीं सर आ गया समझ में एकदम. Good. So some write up about that, some explanation. Just read through, वैसे समझ में आ गया. Next, this is trying to find out the resultant. One force is more, the other is less. So the net force होगी, that will be resultant of the two. More minus the less force will be the resultant. So what we are seeing here on the screen, if the force P is this and Q is this, then दोनों का net force जो होगा will be only this much. Direction of P, the magnitude will be P minus Q. This can be understood as seen from top also. Like this. Here the ship's permanent magnetism is shown. The ship, if it is made like this, the forward component you can see is XA, forward aft component, force P. The same resolved into athwartship component XB, then XC is the resultant force. तो यहां तो हम शिप के परमानेंट मैग्नेटिज्म को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P एंड Q के बीच में, बट इनवेरिएबली कंपास के ऊपर एक तो T होगी जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, और नेट इफेक्ट जो होगा कंपास का डेविएशन जो होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ डिस्टर्बिंग फोर्स, जो अभी हमने देखा अलग अलग हेडिंग पे. Disturbing force is changing direction. Blue pole sometimes forward of the compass, sometimes aft of the compass, sometimes left of the compass, right of the compass. So different headings पे वो change हो रहा है. The compass will settle down to the resultant direction with red pole towards the north. And this, since the compass is pointing in this direction away from north, north से इतना दूर चला गया है, so this angle is known as deviation. North से जितना deviate हुआ, in this case we are seeing easterly deviation, so the deviation is easterly. The compass is going to be pointing in this direction. भाई पकड़ में आई कुछ बात? Yes sir. चलो, good to hear that.
On 0 degree heading, the deviation was 0. On 90 degree, it was maximum easterly. On 180 degree, it was 0 again. On 270 degree course, it was westerly maximum. And back again 360 0. So is it starting at 0 degree, maximum easterly on 90 degree, 0 degree again on south course, maximum westerly on westerly course 270 and 0 again when coming back to north. So deviation, is it changing as the sign of the course? Sin 0 is equal to sin 0 पूरे क्लास में कोई बोलने के लिए नहीं है? नहीं सर, यहीं पे एक मिनट। तो sin 0 की वैल्यू कौन बताएगा भाई? पूछ रहा हूं तुम लोग से। 0 सर, 0। तो डेविएशन 0, sin 90 इज इक्वल टू 1 सर। 1 मैक्सिमम हो गया। जितना भी डेविएशन होगा 5 डिग्री अगर मैक्सिमम होती है तो 5 डिग्री मैक्सिमम चला जाएगा। 5 into 1 इज मैक्सिमम। 5 into 0, 0 डिग्री पे 0। 5 into 180 degrees, sin 180, 0 again. So basically this deviation is basically sign of the heading of the ship. If there is a blue pole forward of the compass, then it produces a deviation which is varying as the sign of the course. That is what we are seeing here. That the deviation is proportional to sign of the course. Or it is inversely proportional to h. जैसे जैसे हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे h की वैल्यू कम होगी, जैसे इक्वेटर की तरफ आएंगे h की वैल्यू बढ़ेगी। तो h अगर बढ़ता है तो डेविएशन कम होती। For the same ship's disturbing force, if the deviation was this much, अगर इसकी वैल्यू हमने बढ़ा दी, h की वैल्यू बढ़ गई, तो डेविएशन का क्या होगा? Will it be less or not? कम हो गया या नहीं? यहाँ पे नहीं समझ में आया? एक बार और सर प्लीज। On the board, if we have h here this much pointing to the north, h is the component, horizontal component. जहाज का deviation because of soft iron or permanent magnetism is this much. Let us say we call it just F. Disturbing force, it is F. इस केस में resultant will be like this or not? यस सर। इतना होगा या नहीं? जहाज का मैग्नेटिज्म वही रहता है और जहाज नीचे इक्वेटर की तरफ आती है। जब इक्वेटर की तरफ आएगी तो h का वैल्यू बढ़ेगा, z का कम होगा। हाँ सर। तो अगर जहाज इक्वेटर की तरफ आती है तो h की वैल्यू बढ़ जाएगी।
Correct? Yes, sir. इस केस में will the resultant be like this? Yes, sir. More steep रहेगा. तो जो पहले डेविएशन थी, ऑरेंज वाली डेविएशन, जब h की वैल्यू कम थी, जब h की वैल्यू बढ़ाई आपने तो डेविएशन कम हो गया या नहीं? हाँ सर. तो what we are saying that deviation is inversely proportional to h. h बढ़ता है, डेविएशन कम होती है. h कम होता है, डेविएशन बढ़ती है. Is it okay now? Yes, sir. That is what you are seeing on screen here. So now that we have got some idea about how the deviation plays out role, so general understanding of, हालांकि specifics में बहुत सारा कुछ अभी बाकी है, but we are not going to go into all that detail. Not studying कि वो 9 rods कैसे कैसे किस तरीके के deviation create करते हैं, वो सब हम बात नहीं करेंगे. But we are just limiting ourselves to understanding the concept of deviation. Based on this understanding, we can understand others also. Next, how do we correct this? Since there was a blue pole forward of the compass, and on easterly course, it was creating maximum deviation, right? Correct? जो डायग्राम, फ्लावर डायग्राम जो बनाया अभी हमने सारे कोर्सेस पे, Yes, sir. When Easterly heading and east and westerly west, course deviation is मैक्सिमम maximum. डेविएशन था या नहीं? हाँ सर. तो हम इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए कंपास के नीचे एक परमानेंट मैग्नेट डाल देते हैं. फॉरवर्ड आफ्ट में कंपास के नीचे एक छोटा सा मैग्नेट का पीस डाल देते हैं जो अर्थ के परमानेंट मैग्नेटिज्म को न्यूट्रलाइज करता है. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैग्नेट जो देख रहे हैं, ये करेक्टर मैग्नेट है जो कंपास के नीचे फॉरवर्ड आफ्ट अलाइन करते हैं और ऑपोजिट रखते हैं इसका पोल. जो ये वाली पोल है, अगर फॉरवर्ड में ब्लू पोल थी तो हम कंपास के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरा मैग्नेट रख के. ब्लू पोल को रेड पोल से न्यूट्रलाइज करते हैं. तो you might have seen some slots in the compass. कंपास के नीचे में स्लॉट्स बने होते हैं, आपने देखा है कभी? इन्हीं नहीं स्लॉट्स सर. के भीतर हम परमानेंट मैग्नेट घुसाते हैं. ज्यादा मैग्नेटिज्म चाहिए तो 2 में मैग्नेट हम डाल देते हैं, 3 में डाल देते हैं. We can have more number of magnets inserted below the compass in order to neutralize the effect of that permanent magnetism that was created by the ship's permanent magnet. So the correction is done, permanent magnet का correction is done by another permanent magnet, equal and opposite में एक रख देते हैं हम. So with this, we'll terminate the class.
and in the next class we'll see what we do. We'll take it forward. Now that concept and theory has been discussed, थोड़ा सा practical life में क्या चीजें होती हैं उसके बारे में we'll have to study a little bit about them. So we'll see in the next class compass card कैसे बनता है, bubbles कैसे निकलता है, how to remove bubbles वगैरह वगैरह, rubber line कैसे create करते हैं, alignment वगैरह क्या होनी चाहिए, उन सब के बारे में we'll have some understanding about those things. Any questions? नो सर, Of course no. Bye bye. ठीक है चलो. नहीं सर, समझ में आ गया. Okay, good. थैंक यू चलो, सर. bye bye. Signing off. Thank you, sir.